So if we talk about the rocks, there are four types of rock जो मैंने बताया. One is your up rock, second is your down rock, third is your front rock and fourth is your back rock. There are four types of rock. तो अभी हम लोग शुरू करते हैं अप रॉक से और समझेंगे किस तरीके से. गाइस पहले ही बताता रहा हूँ, वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है तो स्किप मत करना वरना आपको समझ में नहीं आएगा और बाद में आप मुझसे क्वेश्चंस करोगे तो बहुत दिक्कत होती है. फाइन. सो अभी शुरू करते हैं. सो व्हाट इज द अप रॉक से क्या समझ में आता है? मीन्स वी आर डूइंग समथिंग अपसाइड कुछ कर रहे हैं. अप रॉक, वी आर रॉकिंग टुवर्ड्स योर अपसाइड. फाइन. So let's begin. As the first position, what we need to do is your down position. Fine. This is our down position. This is our 1, and this is our and this is our 2. Means 1, 2, 3. Fine. 5, 6, 7 go. Let's go to 1. 1 is your downwards position. 2 is your lock position. 3 your up position. Fine. So let's do it. 1, 2, 3 go. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and very good. So this what we call it up rock. अभी इसको करने का सिर्फ एक तरीका है. You need to lock your positions. What I am telling you about, that is your first position 1 and 2 and 3 and means you are seeing the ball ना, उसको नीचे मारते हैं ऐसे और वो ऊपर बाउंस करता है. ठीक है. तो सेम एज इट इज, थिंक अबाउट दैट. इज दिस योर बेस्ट पार्ट एज अ बॉल. सो फ्रॉम ओवर हियर व्हाट वी नीड टू डू, वी कैन नीड टू बाउंस इट अप. मींस अभी इसको नीचे पुश ऑन करेंगे. फर्स्ट पोजीशन इज आवर डाउनवर्ड्स 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8. Okay, now let's move it to the down rock. अभी डाउन रॉक का मतलब क्या है? Something towards the down side. अभी हमें रॉक करना है towards the down side. So how we will do? Suppose it's our body. The first thing what we did in the up rock, that the first position was the prep position. What we call it, the prep position was over the down side. Means we were holding like this, and up, then holding like this, then up. Then holding like this, then up. Fine. So we are going to vice versa. We are going to reverse it all. So this standing position is our first position, and this is the second position, and this will be the third position. And when you come to the third position, you need to push your chest towards your inside. Means you are rocking inside. Fine. So it's gonna like this. 5, 6, 7 go. 1 is your this. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and fine. So we are pushing towards the downside, and this proportionate gets involved, and और इसके साथ हमारा डाउन रॉक प्रोपोर्शनेट निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं डाउन रॉक. 5, 6, 7 go again. It's all 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Very good. So abhi prep is the most important key when we are doing towards the up rock. This was our prep. When we are going towards the down rock, this is our prep where we are standing. So 1, 2 and 3 in the up rock. 1, 2 and 3 means 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 and 2, 3 and 4, and make it count fast as you get it all practice. Fine. So it's gonna 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. And about the down rock, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Very good. Now let's move on to the front rock. अभी front rock समझना है आपको, because this is your best part. From here it goes out. So this is your middle position, and this is your first position, and this is your third position. Fine. So what we are going to do, front rock से क्या समझ में आता है? We are rocking towards the front side. So how we will do? We are standing over here. Just prep your position wherever you are standing.
1. Lock this position means we are not going to use like this. We are not going to like this. The upper body is only totally working over here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Means this is the middle position. ये हमारा बीच का position है. This is our center and this is our B part. Assume like this. This is A and this is B. So in the distance between this, we need to do stall. Like what I have said in the earlier Alice. पहले बताया था मैंने कि एक रॉकिंग चेयर है जिसमें हम रॉक कर रहे हैं. Assume that we are rocking on that chair. और अभी कैसे करते हैं रॉकिंग चेयर पे? So like that only 5, 6, 7 go. So I'm going to do this like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Very good. Now it's come for the back rock. How we'll do the back rock? This was the middle position, so we are going to do it the back, means the thing which I have done, we have done in the front side, that we are going to try out the back side. So 5, 6, 7 go. It's gonna like over here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Now these were the 4 rocks. What you need to do? अभी इसको आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा because it needs involvement with the practice. This was a video only of that. एग्जाम्पल वीडियो बोल सकते हैं इसको. ये बोल सकते हैं कि आपने इससे सीखा कि आपको किस तरीके से ये सारी चीज़ें ट्राई करनी है. आई टोल्ड यू अबाउट दैट द प्रेप पोजिशन इन द अप रॉक एंड द डाउन रॉक. अप रॉक जब हम करते हैं तो डाउन पोजिशन इज योर प्रेप पोजिशन एंड व्हेन वी गो आउट फॉर द डाउन रॉक द स्टैंडिंग पोजिशन ऑफ द प्रेप पोजिशन. And when we are going to do for the front and back, the standing position is our prep position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Now what we are going to do? We are going to combine all the steps together. Means from the starting to the end. शुरुआत से लेके अंत तक हम सारे steps को combine करेंगे. Up rock, down rock, front rock, back rock. So let's get started. 5, 6, 7, go. It's gonna be from the up rock, from the down rock, and down rock. 5, 6, 7, go. Boom, 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 boom. Fine. So अभी आप इसको किसी तरीके से भी वेरिएट कर सकते हो. आप ट्रैवल कर सकते हो. आपका मन है आप इसमें कुछ भी ऐड करो. ठीक है. आप ट्रैवल कर सकते हो इसमें. You can travel it all. Fine. You can make it as you want. You can use. आपको जैसे भी समझ में आता है आप इसको यूज कर सकते हो और इसमें कंटिन्यू कर सकते हो. Remember guys, groove is more important because groove actually में अगर आपके बॉडी में नहीं होगा अपना ओन स्टाइल, आपके अंदर से वो नेचुरल स्टाइल है. और हाँ, इसको करते समय एक बात ध्यान रखना. ग्रूव इज आई टॉक अबाउट दैट ग्रूव इज अ नेचुरल बॉडी मूवमेंट. व्हाट वी नीड टू से अबाउट दैट कि नेचुरल का मतलब क्या है? जिस चीज़ को हम बना नहीं रहे, नेचुरली, कुदरती. ठीक है. तो हमें ना कुछ बनाना नहीं है, मतलब कुछ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है. एंड पॉपर्स बी अवेयर अबाउट दैट. अगर आप ग्रुप ट्राई कर रहे हो और गेटिंग इनटू द हिप हॉप जॉनर और आप हिप हॉप के मेन कोर में आ रहे हो, वेयर द ओल्ड स्किन एंड ऑल द 90s ओल्ड स्कूल डांसिंग विच आर देयर, तो अगर आप उसको करने जा रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा जो भी ऐसे बॉडी कंट्रोल करते हैं, लाइक जो पॉपर्स हैं या जो नए बिगनर्स हैं, उनके लिए खासकर ये बात है कि डू नॉट कंट्रोल योर बॉडी. आप अपने बॉडी को कंट्रोल करने की मतलब कोशिश करना. मतलब अगर यू आर डूइंग फ्रॉम द प्रेप पोजिशन 1 and 2, तो ऐसा बहुत लोग का होता है. मैं सिखाता हूँ तो मुझे पता है. ठीक है. तो बी एट योर नेचुरल, मतलब अपनी बॉडी एकदम नेचुरल छोड़ो. डू कंट्रोल करने की कोशिश मत करो. एकदम बोलते हैं ना ऐसे ढीला, एकदम ढीला. राइट ऑन. ठीक है. राइट ऑन. तो वो होगा. ठीक है. बहुत ज़्यादा उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो बी नेचुरल एंड ट्राई योर लेवल बेस्ट
एंड होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा गाइस। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग और आगे ओल्ड स्कूल के कुछ मूव सीखेंगे और देखेंगे उन चीज़ों को किस तरीके से। और हाँ, एक चीज़ और, मैं सिर्फ ओल्ड स्कूल के स्टेप्स नहीं बताऊंगा, आपको उसमें वेरिएशंस के साथ दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप वेरिएट कर सकते हो। मतलब सपोज करो आपने एक स्टेप सीखा और आप उसको जो है, मतलब सपोज करो अगर मैंने एक स्टेप आपको सिखाया और 4 काउंट्स और 2 काउंट्स, तो आप उसको किस तरीके से 64 काउंट्स तक ले जा सकते हो स्टेप का तरीका बदल बदल के। मतलब एक ही स्टेप को हम लोग 32 काउंट्स तक कर सकते हैं, 16 काउंट्स तक कर सकते हैं, 64 काउंट्स तक कर सकते हैं, अगर हम उसमें वेरिएशंस खोज लें। फाइन। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप अपने लर्निंग्स पे ध्यान दोगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इतनी दूर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप वो इंसान हो जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, तो कुछ सीखना चाहता है। तो सीखने वालों की भाई हमेशा कद्र होती है, बिकॉज आई एम अ लर्नर। सो एक लर्नर की मैं तारीफ करने से पीछे नहीं हटूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस गाइज। प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक, एंड कोई भी सवाल हो तो कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।